It must have been one of the most amazing flight stories of all times. एक ऐसी कहानी जिसके ऊपर भी आज भी विश्वास करना मुश्किल है. एक एयरलाइन जो कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही है और लोगों से भरी हुई है. इट इज आउट ऑफ कंट्रोल. और इस प्लेन का जो पायलट है वो प्लेन से बाहर है. कॉकपिट के अंदर 3 बहुत ही घबराई हुई फ्लाइट अटेंडेंट्स उसकी टांगों को पकड़े हुए हैं. अगर वो उनकी टांग हाथ से छूट गया तो उसका शरीर, जो पायलट का जो शरीर है, दैट वुड बी सक्ड इनटू द इंजन, और जिससे कि पूरा प्लेन ही नीचे क्षतिग्रस्त हो सकता है. और कंट्रोल्स पे एक यंग को पायलट अपनी पूरी कोशिश कर रहा है जिससे कि प्लेन को किसी नजदीक के एयरपोर्ट पे ले जाके उतारा जा सके. 87 पैसेंजर्स और क्रू की जान जो है एक धागे से लटकी हुई है. A lot of people go through life thinking it'll never happen to me, but you tend to go through life thinking it can. I said I thought I was going to die, Mother. I thought I was going to die. This bizarre incident is the ultimate test of human survival. और जो इन्वेस्टिगेशन फॉलो करी इस इंसिडेंट के बाद, उसने जो गलतियां थी इस इंसिडेंट में उसको तो उजागर किया ही किया, और नए वेज भी उसने दिखाए जिससे कि ऐसी गलती फिर दोबारा ना दोहराया जा सके. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरी, लेकर के आया हूँ आपके लिए एक नया एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स का. और ये शो आता है आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA 5390 जो कि जा रही थी बर्मिंघम इंग्लैंड टू मलागा स्पेन, उनके लिए जो क्रू था उस फ्लाइट का, उसके लिए 10 जून 1990 एक नॉर्मल रूटीन था. वहां के जो क्रू थे वो वही काम कर रहे थे जो कि उनको बहुत पसंद था. स्टूवर्ड्स नाइजल ऑक्टन और साइमन रॉजर्स, और साथ में स्टूवर्डेस सू प्रिंस जो हैं, एक बहुत ही काबिल और एक्सपीरियंस टीम थी जिन्होंने कितने सालों से एक दूसरे के साथ ऑफ एंड ऑन काम किया था. At Birmingham, all the cabin crew and all the pilots, they all knew each other. We're all on first name terms. Simon was a good friend of mine anyway, because we, just go out for a beer or a curry or whatever like that. Everybody was friendly to everybody else. जो नया मेंबर था इस टीम में वो थे को पायलट एलिस्टर एचिंसन, जो कि एक यंग एक्सपीरियंस्ड को पायलट थे और उसी दिन सुबह मैनचेस्टर से अपनी गाड़ी ड्राइव करके आए थे. Morning, Alistair. Come on in. और इस प्लेन को जो उड़ा रहे हैं वो है कैप्टन टिम लैंकेस्टर, जो कि एक्सपीरियंस्ड है एकदम, और उनको 21 साल का तजुर्बा है ऑफ बीइंग अ कमर्शियल पायलट. Well, we've got to get started, eh? चीफ स्टूअर्ड जो हैं जॉन ह्यूवर्ड जो हैं, वो अपनी बाकी टीम को एक फाइनल ब्रीफिंग देते हैं. Morning, everyone. Morning. Right. Is that the first officer? Yeah, just down from Manchester. Nice seeing your face. Okay. Malaga. Right, looking forward to this.
Right, Nige, you can sit up with me up front and talk rugby. Sue, where would you like? Over the wing. OK, so, Simon, you're at the rear. All right, now, just a few safety questions. Nigel. टेक ऑफ से पहले जो को पायलट हैं वो जहाज का एक आउटसाइड से मुआयना करते हैं कि कोई सब कुछ ठीक ठाक ही नहीं है कि नहीं, कि कोई गड़बड़ तो दिखाई नहीं दे रही प्लेन। और कॉकपिट के अंदर कैप्टन लैंकेस्टायर जो है वो रिव्यू करते हैं लॉग बुक्स का, मेंटेनेंस की जो लॉग बुक है कि पिछले दिन क्या मेंटेनेंस प्रोसीजर फॉलो किए गए इस प्लेन के ऊपर। Everything okay? Fine. She's just come out of maintenance by the look of it. Hardly much there. Just changed the windscreen. जो पैसेंजर सवार हैं इस प्लेन पे, many of them know very well about this trip and they are looking forward to having a relaxed trip to Spain. I was going to catch a plane from Birmingham to Malaga to meet my mum. My sister and I were joining her there for a week's holiday, a girls' week. I live in the south of Spain, and 2 or 3 times a year I come back to see my grandchildren and also my mother. Everyone lives near Birmingham, so that's the route I normally take, Malaga, Birmingham. इन सब पैसेंजर्स और क्रू जो है they will soon have the adventure of their lifetime. Seem to have made yourself comfortable. Too right. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. My name is Tim Lancaster. Welcome aboard this British Airways flight to Malaga. Unfortunately, He seemed laid back and quite jovial, really. You know, sort of well, it's a lovely day in Malaga, blue skies, sunshine. Sit back and enjoy the flight. Sunny, and we still expect to get you there on time. Birmingham Tower, Speedbird 5390. We're ready to start and push. Speedbird 5390. Clear to start and push. Ladies and gentlemen, we are now going to take you through our Safety procedures and equipment. As this information is for your benefit, we ask you to watch and listen carefully. Clear to start engines. Starting number 2. Emergency exits are on both sides. The stewardess shows you the emergency exit and all the emergency gear. And, of course, nobody's really watching. One chap was quite blasé, he was reading the Times, and people weren't really bothering because we've all been on flights and, you know, it's no big deal. The air can be topped up by using the mouthpiece, and there is a whistle for attracting attention. The BAC 111 was known as the Jeep of the Sky, a workhorse which was easy to maintain and had a good safety record. ये जहाज जो है तकरीबन 43 टन जिसका वजन है, it is carrying 81 passengers and 6 crew members और अब वो उड़ रहा है 23,000 फीट की ऊंचाई पर। अगले 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय में वो स्पेन पहुंच चुके होंगे। Only a catastrophic accident can pull out this plane from the sky. Alistair, I can see my house from here. उड़ने के 2 मिनट बाद पायलट जो है एंगेज कर देते हैं ऑटो पायलट को। कैप्टन टिम लैंकेस्टर जो है अपना शोल्डर स्ट्रैप उतार देते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं कॉकपिट के अंदर। Now I went into the flight deck to ask Tim and Alistair what they would like to drink. You gentlemen like a tea? Please, the usual.
Bill, one sugar, please. And I said, your breakfast's on. It'll only be a few minutes. उड़ने के 13 मिनट बाद प्लेन उड़ रहा है 17,300 फीट की ऊंचाई पे और अब वो सिर्फ 5,000 फीट कम है जो उनकी असाइंड फ्लाइट हाइट है जो कि 23,000 है, उससे वो तकरीबन 5,000 फीट कम है अभी। तभी क्षण भर में सब कुछ बदल जाता है। कैप्टन की जो विंड स्क्रीन है वो एकदम टूट के बाहर निकल जाती है और एक सफेद धुंध स्क्रीन के सामने बन जाती है। A sort of really intense stomach body shaking thud. We were just diving, really. And then we started to judder like this. And I was a bit stunned. I thought, what? I thought, oh God, it's a bomb. जो को पायलट है वो किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि प्लेन को कंट्रोल में ला सके और जो कि 350 मील प्रति आवर की हवाओं से झेल रहा है। उनके पास कैप्टन के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है जो प्रेशराइज्ड एयर हवा प्लेन से निकली उसके साथ वो भी बाहर सक आउट हो गए हैं प्लेन की बॉडी से। The rushing winds have pinned Captain Lancaster on the roof of the cockpit. प्लेन के अंदर पायलट की टांगों ने have jammed the control column forward, disconnected the autopilot और प्लेन को डाल दिया है एक जबरदस्त डाइव में। को पायलट एलिस्टर को अब अपने सारे फ्लाइंग एक्सपीरियंस की जरूरत है। वो अकेले ही रह गए हैं इस प्लेन को कंट्रोल करने के लिए। पायलट जो है कॉकपिट की छत से पिन डाउन हो चुके हैं बाय दी विंड्स और प्लेन जो है नीचे 17,000 फीट की ऊंचाई से सीधा नीचे की तरफ आ रहा है। जो उसके थ्रॉटल्स हैं दे हैव बीन जैम्ड फॉरवर्ड जिससे कि जहाज की स्पीड बढ़ गई है, वो हो गई है तकरीबन 400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से वो जहाज नीचे की तरफ आ रहा है। जो को पायलट है एलिस्टर उनको अकेले ही किसी न किसी तरह इस प्लेन को कंट्रोल में लाना है और जो स्टूवर्ड है नाइजल वो देख रहे हैं कि उनके कैप्टन हैव बीन sucked out by the winds from the plane. And I looked in, the flight deck door was resting on the controls and all I could see was Tim out the window. I jumped over, put one foot in the captain's footwell and the other one was down the side of his seat. I just grabbed him before he went out completely. इससे पहले कि कैप्टन लैंकेस्टर पूरी तरह प्लेन के बाहर जा पाते, स्टूवर्ड नाइजल ऑक्टन ने उनकी टांगे पकड़ रखी हैं किसी तरह और बाहर प्लेन के बाहर जो टेम्परेचर है वो है -17 डिग्री सेल्सियस और जो हवा चल रही है वो तकरीबन 390 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और उससे झेल रहे हैं जहाज से बाहर कैप्टन लैंकेस्टर। The tornado in the cockpit is making life very difficult for the co-pilot. जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो इस को-पायलट एलिस्टर की आवाजें मेडे की जो कॉल कर रहे हैं उसको सुन पा रहे हैं, लेकिन इतनी तेजी से हवा जो चल रही है कॉकपिट के अंदर वो उनके जवाब को बिल्कुल ड्राउन कर रही है। उनका जवाब सुन ही नहीं पा रहे हैं को पायलट एलिस्टर। जो कैप्टन की टांगे हैं वो अभी भी अटकी हुई हैं विद द कंट्रोल कॉलम
और जो प्लेन है वो बहुत बिजिएस्ट जिसे कहते हैं एयर लेन्स से गुजर के नीचे की तरफ आ रहा है और एलिस्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी कंट्रोल में लाने की प्लेन को, लेकिन वो ला नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो कैप्टन की टांगे हैं वो जैम्ड है अगेंस्ट द फ्लाइट कॉलम। और अब जो कि प्लेन इस बिजिएस्ट एयर लेन्स ऑफ द वर्ल्ड से भी नीचे की तरफ अनकंट्रोलेबल गिर रहा है, तो एक एडेड रिस्क बढ़ गया है ऑफ अ मिड एयर कोलिजन विद अनदर एयरक्राफ्ट। सीनियर स्टुअर्ड जॉन जो है वो देखते हैं केबिन से कॉकपिट का नजारा और वो भी जो उनके बस में आए वो मदद करने की ठानते हैं। I looked up and there was Nigel sort of hanging across the seat in the flight deck. In front of me, the flight deck door had fallen forwards and trapped itself between the actual door frame and the throttles of the aircraft. So I literally stamped on it twice and it literally broke into 3 or 4 pieces. Behind, on the wall of the flight deck, there is a spare seat for anybody to observe the flight or whatever. And I thought, well, if I put my arm through the seatbelt there, I can grab both of them and at least we've got some sort of anchor point inside the aircraft. एलिस्टर जो कि को पायलट है और वो कभी भी इस क्रू के साथ नहीं उड़े हैं, वो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका ध्यान सिर्फ एक ही बात पे है कि किसी न किसी तरह इस प्लेन को सुरक्षित जगह पे उतारा जाए या एटलीस्ट उसको अंडर कंट्रोल लाया जाए किसी न किसी तरह। उनके पास वापस अब थ्रॉटल्स का कंट्रोल आ गया है क्योंकि जॉन और नाइजल ने जो है कैप्टन की टांगों को कंट्रोल कॉलम से दूर कर दिया है। लेकिन को पायलट एलिस्टर जो है प्लेन को स्लो करने की बजाय वो प्लेन को ही लेट द प्लेन फॉल थ्रू क्विकली ऑन दिस डाइव, क्योंकि इसका 2 रिजल्ट हो सकते हैं उनके ऐसे करने से, क्योंकि वो एक तो बाकी एयरप्लेन के ट्रैफिक से बच जाएंगे और दूसरा प्लेन इतने नीचे आ जाएगा कि उनको ऑक्सीजन इक्विपमेंट यूज करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि प्लेन जो है वो पुराना प्लेन है और इस प्लेन में पैसेंजर्स जितने पैसेंजर सवार हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है इस प्लेन के ऊपर। प्लेन का जो एयर स्पीड इंडिकेटर है वो रेड में चला जाता है। और दूसरी तरफ केबिन में जो बाकी 2 स्टुअर्ड हैं, सू और साइमन, वो पैसेंजर्स को रेडी कर रहे हैं जिसके लिए फौरन इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। प्लेन अब आ गया है 11,000 फीट की ऊंचाई पे और वो 17,300 की ऊंचाई से 11,000 फीट की ऊंचाई पे आ गए हैं सिर्फ 2.5 मिनट में। और अब जो है प्लेन लेवल आउट होता है इस ऊंचाई पे और स्पीड कम होती है 170 मील प्रति घंटे की। तो उससे क्या हुआ है, कैप्टन जो थे टिम, वो जो कि पहले रूफ पे थे प्लेन के, अब वो साइड में उनकी बॉडी आ गई है, प्लेन के साइड में उनकी बॉडी आ गई है। स्टुअर्ड साइमन रॉजर्स भी पहली बार कॉकपिट के इस नजारे को देखते हैं प्लेन के पीछे से आके। सब यही समझ रहे थे कि कैप्टन की डेथ हो गई है। Now the aircraft had got to sort of flying fairly level. Simon came up from the back.
Nigel was beginning to get really sort of achy now with his arms, and I knew he wasn't going to let go unless he was sure that Tim wouldn't fly out of the window. We all had fear in our eyes. We were all worried sick because we thought, you know, either Tim's going to die or we're going to die, you know. That was going through my mind. But it was up to Alistair then, and it was up to us three, Simon and John and myself, to hold on to grim death. All I remember is Tim's arms flailing out. His arms seemed about 6 foot long. And I'll never forget that. His eyes were wide open. I mean, his face was hitting the side of the side screen, but he didn't blink. And I thought to myself, and I said to John, I said, I think he's dead. I think he's dead. And I said, you and Sil have to hold on. I can't hold on anymore. I can't hold on anymore. I've lost the feeling in my arms. And we decided to put Simon. I said to Simon, you sit in that jump seat and fasten yourself in. With Simon sitting in the seat, we'd freed Tim's legs from between the control column and the seat. So we hooked his feet over the back of the captain's seat, and then Simon literally put his hands on the top, just so he was holding his ankles down. Hey, look, what's going on? We're going to be all right. But I think the captain's dead. Well, I couldn't believe it, because he just told us what a lovely day it was. You know, blue skies, sunshine, relax and enjoy the flight. And then next minute, he's dead. और साइमन और एलिस्टर के पास अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना था कि वो कैप्टन की बॉडी का अब क्या करें। कोई भी शब्द नहीं कहा जाता, लेकिन सबके एक्सप्रेशन से यही लगता है कि बेस्ट सॉल्यूशन यही होगा कि कैप्टन की बॉडी को जाने दिया जाए। No! Can you hold on to it, please? सब लोग यही डिसाइड करते हैं कि कैप्टन को जहां है वहीं पे रखा जाए, क्योंकि छोड़ने का मतलब है कि हो सकता है वो कोई और डैमेज कर दे विंग से टकराने के बाद या किसी और कारण से। Releasing the body at the position it was in, it would have gone close to the upper area of the wing. It could have damaged the leading edge of the wing. Had it gone over the wing, it could very well have gone into the engine. Quite a lot of damage could have been caused by the release of the body. So I think it was a very sensible decision to try and keep him where he was. प्लेन जो है अब तकरीबन 11,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा है और अकेले एलिस्टर को भी सब कंट्रोल करना है, और वो अपनी याददाश्त से इस प्लेन को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हीथ्रो एयरपोर्ट के आसपास ही प्लेन को उड़ा रहे हैं। और हीथ्रो एयरपोर्ट जो है वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। वो पहली बार 7 मिनट के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आवाज सुन पा रहे हैं। Requesting radar assistance onto the nearest airfield, please. Speedbird 5390, roger. Can you accept landing at Southampton? Speedbird 5390, I am familiar with Gatwick. Would appreciate Gatwick. एलिस्टर उतरना चाहते हैं गैटविक एयरपोर्ट पे, जो कि जिस एयरपोर्ट पे वो कई बार जा चुके हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि साउथहैम्पटन एयरपोर्ट उनके करीब है और उनको किसी न किसी तरह जल्दी से जल्दी इस प्लेन को जमीन पे उतारना है। And I am on 150 knots. Requesting radar assistance into Southampton. When you go into an airport that you're not used to, you normally have charts, let-down plates, that kind of thing that you can read up on and learn something of the airport you're going to. But he knew nothing of Southampton. He hadn't been there. He had no charts because everything had gone out the window. There was no let-down plates to look at the approach and so on.
प्लेन में जितने भी मैप्स और चार्ट्स थे वो कैप्टन के साथ ही प्लेन से बाहर उड़ गए थे और अब जो है अलिस्टर को सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल ही गाइड कर सकता है साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पे प्लेन उतारने के लिए। Southampton, this is Speedbird 5390. Do you read? Speedbird 5390. Good morning. Identified on handover from London radar 6 miles west of Southampton Airfield. What is your passing level? Roger, sir. I am not familiar with Southampton. Request you shepherd me onto the runway. When he spoke, he was obviously stressed. It sounded as if he was under a fair bit of pressure. What is your number of persons on board? We have 84 passengers on board, and I think that will be all until we are on the ground. Roger, that's copied. I've been advised it's pressurisation failure. Is that the only problem? Negative. The captain is half out of the aeroplane, I understand. I believe he's dead. Roger, that is copied. My feeling was when he told me what was going on, it was one of disbelief because it doesn't actually happen. You know, it's one of these things that you see in films, that happens in films, but it doesn't happen in real life. And it was sort of the hairs in the back of the neck go up and there's this feeling down the spine, the tingle down the spine, and you think, no, it's not for real, but it's got to be. Flight attendant holding on to him, but request an emergency facility for the captain. I think he is dead. Affirm. What is your passing level? Leaving flight level 5,500 feet on 1019. Roger, that's copied. I'll give you a little bit more space, then I'll turn you on to a heading of 180. Yeah, it's a full emergency. Air traffic control में रंडल जो है first opportunity पे emergency services को contact करते हैं और पूरा सब कुछ तैयारी शुरू हो जाती है Southampton airport पे to receive this BA flight 5390. Board, but I'll let you know. Could you confirm that the length of runway at Southampton is acceptable for a 111? Yes, it is acceptable for a 111, and I'll give you the figures shortly. As long as we have at least 2,500 metres, I am happy. I'm afraid we don't have 2,500 metres. Neither do Bournemouth. We have a maximum of 1,800 metres. एलिस्टर जो है वो अब कंसर्न्ड है क्योंकि जो प्लेन इज फुल ऑफ फ्यूल, जो कि उनका लैंडिंग वेट है उससे ज्यादा वजन है प्लेन का, और दूसरा उनका जो जहाज है BAC 111 इट कैनॉट डंप फ्यूल, और अगर रनवे ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है. Whether the aircraft could actually stop on the runway, or whether the tyres would burst, or whether he would go off the end of the runway. That's obviously what he was worried about when asking for 2,200 metres. 5390. Thank you very much. We are 3 greens and flaps 45. So we are set for approach, but make it please very gentle. Yes, I will indeed. You are number 1 traffic. If you think about it, all the airline pilot training is done with 2 pilots, both compartmenters in the cockpit, one flying the aeroplane and the other one doing all the emergency drills. So what you actually had was the captain hanging out the window, at least one person hanging onto his legs, and Alistair flying the aeroplane with nobody else to talk to. Speedbird 5390. It's 9 miles from touchdown. You're clear to land. Wind indicates 020 degrees at 14 knots. Descend to height to 1500 feet. QFE is 1017. Roger, sir. Descending to 1,500 feet. Talk me down all the way. I need all the help I can get.
Roger, you'll be able to stop the aircraft On the runway and evacuate the aircraft on the runway. He must have been about 6 or 7 miles from touchdown. And obviously at that point I kept talking until he was happy he could see the runway and was happy to continue looking out the window and land the aeroplane. At the point he said he was visual with the runway, I effectively stopped talking. not acknowledge unless requested. It will be an uninterrupted talk down, but feel free to interrupt if you feel you need to. 5390, thank you very much. I have the runway in sight. Thank you, you are clear to land. Do you wish me to continue with any further information? Negative. टेक ऑफ करने के सिर्फ 32 मिनट बाद a plane full of fuel and with 81 terrified passengers और साथ में कैप्टन जो कि प्लेन से बाहर सक्ड आउट हो चुके हैं, co-pilot Alistair Atkinson tries to perform his most difficult landing of his life. सुबह 8:55 पे ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA 5390 makes a perfect landing at the Southampton airport. Emergency services तुरंत ही प्लेन को घेर लेते हैं. फायर फाइटिंग टीम कैप्टन टिम लैंकाशायर की बॉडी को रिमूव करते हैं और सारे पैसेंजर्स को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं. I remember seeing the co-pilot, the man who really, if it wasn't for him, would have been on the other side by now, and is walking down the runway very slowly, shaking his head, and he got an ambulanceman walking with him with his arm around the shoulders of the co-pilot. And the co-pilot was shaking his head as if... I remember that distinctly. I don't know why, but I do. Alistair Atkinson has carried out a marvelous piece of flying. ऐसा जो कभी भी एविएशन इंडस्ट्री में न सुना गया था इससे पहले. उनको अपने कैप्टन के बिना ही अकेले प्लेन को उड़ाना पड़ा, और जो कैप्टन who underwent such physical stress कि बचना तो बहुत मुश्किल था. I think these extreme conditions no one expects to occur in their lifetime. His survival time must have been measured in no more than tens of minutes as he became colder and colder and his body systems began to shut down. कैप्टन टिम लैंकेस्टर की बॉडी को दोहरा आक्रमण सहन करना पड़ा था. एक तो फिजिकल स्ट्रेस जो कि बॉडी एकदम सक आउट हो गई थी प्लेन से, उसकी वजह से, और दूसरा इतनी ठंड और लैक ऑफ ऑक्सीजन एट 17,000 फीट. हर एक 1000 फीट की ऊंचाई पे जब हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर 2 डिग्री कम हो जाता है. तो उस 17,000 फीट की ऊंचाई पे टेम्परेचर on the outside of the plane would have been -17 degrees Celsius.
और ऊपर से जो विंड चिल था उसने भी इंश्योर किया होगा कि कैप्टन लैंकेस्टायर loses heat at a very fast rate. He would have lapsed into semi-consciousness and then unconsciousness, and as the temperature, his core body temperature fell, he would have finally died as a result of the excessive cold in that environment. और चाहे जितना भी ट्रॉमा टिम लैंकेस्टर की शरीर ने सफर किया हो, उनकी कहानी में एक बहुत ही सरप्राइजिंग ट्विस्ट था दोस्तों. Once I've ever been here, and that was 10 years ago, 15. जी हाँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कैप्टन टिम लैंकेस्टायर survived his ordeal. Here he is. Hi guys. John, how are you? Nice to see you. Nice to see you, mate. Nige, come in. Hi. Like on SCP, when you go in and you've got to pretend. कुछ भी नहीं हुआ. उस दिन उस फ्लाइट ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA 5390 में किसी भी इंसान की रादर जान नहीं गई. There were no fatalities on that British Airways flight BA 5390 on 10th June 1990. As the frozen, lifeless body of Tim was removed from the airplane, nobody would have expected him to survive, but miraculously, he slowly came out of his ordeal. Tim, can you hear me? I regained some consciousness on the ground at Southampton because I remember big red and white things, which are obviously fire engines and ambulances, not people and not conversation. And then my next clear, lucid thoughts are in hospital in Southampton. Over the next few days, all the bits eventually arrived back in my sort of consciousness, and I put the jigsaw together and, sort of played the whole story for myself and understood what had happened. There was a big bang, a noise of all the air escaping, but I remember watching the windscreen move away from the aircraft, and then it had gone like a bullet. It disappeared into the distance. And I think there was an even bigger bang, or there was an even bigger bang. And I was very conscious of going upwards. And, the whole thing became completely surreal then, as it would. And I was aware of being outside of the aeroplane, but that really didn't bother me a great deal. What I remember most clearly is the fact I couldn't breathe, because I was facing into the airflow. And I turned round and actually turned my body round. I was sort of looking back along the top of the aircraft at that stage, and I could breathe then. And yes, I remember that. I can remember seeing the tail of the aircraft. I can remember the engines going round, and then I don't remember much more. Memory stopped at that point. I went down there last year, but they've changed the airport totally now. I'm glad I did hold on, because Tim was alive. I mean, he's a very strong man. He must have been. To survive that, I wouldn't have been able to survive it. That's all very dramatic. It is, isn't it? टिम लैंकेस्टर का बच पाना बिल्कुल एक मिरेकल जैसा है. और he was minutes away from dying. Actually, it was the flying of Alistair Atkinson जिन्होंने की टिम की जान बचाई. उनकी क्विक थिंकिंग कि सिर्फ 22 मिनट में उन्होंने प्लेन को जमीन पे उतार दिया, उसी से जो है टिम की जान बच पाई. नहीं तो उनका बच पाना, इस जबरदस्त ट्रॉमा को झेल पाना बहुत ही मुश्किल काम होता. जो फिजिकल ट्रॉमा टिम ने झेला था वो बहुत ही लिमिटेड था. उनको ब्रूजेस आए थे, शॉक था, और जो था
फ्रॉस्ट ब्राइट हुई थी और इसके अलावा उनका लेफ्ट हाथ का थंब टूटा था और राइट हैंड में उनकी बाह और रिस्ट को फ्रैक्चर आया था। इस हादसे के 5 महीने बाद ही टिम लैंकेस्टर पूरी तरह रिकवर हो चुके थे और वो फिर उड़ रहे थे, प्लेन को उड़ा रहे थे। और कैप्टन इकलौते इंसान नहीं थे उस दिन जिन्होंने ट्रॉमा फेस किया था। कॉकपिट में जो टॉर्नेडो चल रहा था उसके बीच प्लेन को कंट्रोल करना और उड़ाना, कहीं भी इस बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। If it goes comfortable at all, just let me know. कुछ पायलट जो समझ सकते हैं, जो ट्रॉमा फेस किया एलिस्टर और उनके साथी क्रूमैन ने, वो है रॉयल एयरफोर्स के ट्रेनी पायलट जिनको कि ट्रेनिंग में ये सब सिखाया जाता है। दे हैव टू फेस एक्सप्लोसिव decompression techniques during their training period. तब उन्हें सिखाया जाता है the effects of a window blowing at 25,000 feet. Individual intercoms. Checked and operated. All connections. Checked and firm. Console checks are complete. Clear to claim instruction of the medical officer. Climbing to 8,000 feet at 4,000 feet per minute. पहले जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेट किया जाता है at 8,000 feet. ये एक नॉर्मल प्रेशर होता है in any commercial plane और कोई भी इस को झेल सकता है काफी लंबे टाइम तक के लिए और विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। लेकिन अगर इस प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाए तो परिणाम अलग ही दिखाई देते हैं। Students, listen in. Will all students please indicate with a clear thumbs up that they are ready for rapid decompression? 8 thumbs, rest your thumbs. Students, stand by for rapid decompression. In 5, 4, 3, 2, 1, now. The mist in the hyperbaric chamber is similar to the fog which formed when the window blew out on flight 5390. Chamber altitude is stable at 25,000 feet. High hold is enabled. Crossbent is on and you're clear to commence hypoxia training. Good, well done. Good, we'll commence hypoxia training on students 7 and 8. Confirm, sir. जब severe decompression होता है तो जो हवा होती है केबिन के अंदर, उसके अंदर is the हवा in the cabin is not able to hold on to its water vapor और जो पानी है उस हवा में वो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में in the fog of a fog. जब जैसे ही डीकम्प्रेशन होता है तो जो केबिन के अंदर हवा होती है इट इज नॉट एबल टू होल्ड ऑन टू इट्स वाटर वेपर और वो रिलीज करती है उसको इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ अ फॉग। और जैसे ही कुछ टाइम के बाद वो फॉग क्लियर होता है तो the lack of oxygen at that height, now it begins to death. Okay, let's put your industry. Start copying these sheets in the right-hand margin. Without oxygen, at first we begin to see a reduction in their reaction speed, and we see personality changes, much like someone experiences when intoxicated with alcohol. So we see that some students become euphoric, some students become quite subdued, and some students begin to develop forgetfulness. Have a look at the ugliness of your colleagues' faces, see if they get any prettier whilst you're becoming hypoxic, and carry on with the We see increasingly impaired performance in our students. Thinking is slowed and their reaction speed becomes increasingly slowed until they begin to develop sort of lapses of concentration, falling into unconsciousness, and finally death if their oxygen supply is not re-established. Indicating that the blood is no longer carrying as much oxygen as it was.
This is all about you experiencing your personal symptoms and having others observe the symptoms in you. अकेले प्लेन को उड़ाना, वो भी उस तूफानी हवा के बीच में और उस हाइट पे जहाँ पे कि ऑक्सीजन की कमी थी। जो को पायलट हैं एलिस्टर एकिंसन, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त फ्लाइंग का पेश करी उस फ्लाइट को बचाने में और पैसेंजर्स को भी बचाने में साथ ही साथ। और जब ये क्राइसिस हो रहा था तो इन्वेस्टिगेटर्स की टीम जल्दी ही साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पे पहुंची और खोजबीन शुरू करी क्लूज की कि आखिरकार क्या हुआ था इस फ्लाइट के साथ। और जो इनिशियल इंस्पेक्शन थी उससे पता लगा कि जो फ्रेम था विंडस्क्रीन का उसमें तो कोई डैमेज नहीं था और क्योंकि कांच के टुकड़े भी नहीं थे तो इसलिए बर्ड स्ट्राइक का भी जो थ्योरी है उसको भी रूल आउट किया गया। स्टुअर्ट कैलन जो कि सीनियर इन्वेस्टिगेटर थे विद द एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच हैड very little to go with in the beginning. Windscreen was missing, there was a certain amount of blood around, there was some minor dents and scrapes on the fuselage, as you'd expect if the window had gone past, and really that was about it, apart from a lot of paper scattered around inside. और उनको पहला ब्रेक मिलता है from the maintenance logs जो कि उनको प्लेन के कॉकपिट में मिलते हैं। उसके मुताबिक पिछले दिन ही प्लेन को जो है it had undergone maintenance और उसका विंड स्क्रीन चेंज हुआ था। तो स्टुअर्ट जो है he pays a visit to the British Airways maintenance facility at Birmingham. I wanted to find out exactly what had happened to the aircraft before it took off. And I'd arranged that I should talk to the shift maintenance manager who fitted the window. There was a slight problem there because he'd been on night duty and consequently he had finished his shift at roughly the same time as the windscreen came out of the aircraft and he wasn't in a fit state to be interviewed. He needed to get some sleep. Stuart Cullen. Good morning. Nice to see you. I was expecting you. Yes, good. Thank you very much. Is this the hangar in question? This is the main hangar, yes. Yes. So in the meantime, I looked around the facility. I made sure that any paperwork and any records of the aircraft had been identified and taken away so they couldn't be accessed by anyone else, and waited until he came in. Hello, I'm from the AIIB. Yes, and this is my colleague. What I'd like to do today is just find out what went on during that shift pattern and how it went. Thank you very much. Did you notice anything about the window itself, any stress marks that were worrying you? My first conversation with the shift maintenance manager was relatively general because at that stage we had no evidence that was relevant. Yourself? You didn't delegate it to somebody else and then check Stuart, it? there's a phone call for you. Just come in. Oh, right. Would you mind if I took this and come back? So I took the call and found that it was information about the windscreen which had been found near Didcot, and there were something like 30 bolts found with it, most of which were one size short in diameter, one size too small in diameter. ये बहुत ही क्रूशियल एरर है। कुछ प्लेन्स में जो है वो विंडो जो विंड स्क्रीन है वो विंडो में अंदर की साइड से लगाई जाती है और जो अंदर की साइड का प्रेशर होता है वो उस विंड स्क्रीन को अपनी जगह पे होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इस प्लेन BAC 111 में जो है वो विंड स्क्रीन बाहर की साइड से लगाई जाती थी और एनी मिस्टेक, एनी वीकनेस इन द बोल्ट विल रिजल्ट कि जो अंदर का प्रेशर है वो इस विंड स्क्रीन को एकदम इट विल ब्लो आउट इन द ओपन। और कैलन को अपना
ये जो फॉल्ट थी वो जल्दी ही मिल गई और साथ ही मिल गए द गिल्टी पर्सन. I've had some news which I think is very relevant. I've heard from my colleagues who are working on the bolts. They tell me they're the wrong bolts. They're the wrong diameter. No, that's not possible. They're exactly the same bolts that I took out of there. He's a professional man. He's very keen on doing things to his mind in the interest of the company. And he's suddenly told that he's put a windscreen in using bolts of the wrong size. And he's absolutely shocked. I can show you. I'll show you the bolts I got out of there. One thing that came out was that he said, oh, the old bolts went into a waste bin in the hangar where he did the job, and they may still be there. So we rushed across to the waste bin and found something like 80 discarded bolts. Here. They'll be in here. This is where I put them. These are the bolts. And these are the ones you checked against the new ones? That's right, yeah. I took from the carousel. There's really excellent evidence. Gold as far as I was concerned. Well, I'll take these away. Okay. By comparing the maintenance manual with what the engineer had told, Stuart Callan को पता लग गया the first event जो कि गलत हुआ था उस रात एक रात पहले जबकि windscreen of the BAC 111 was replaced. We went through the whole chain of events that had occurred, and we found that there were something like 13 different anomalies which led to the fitting of the bolts. And had any of these caused him to think, the sequence of events would not have continued and there wouldn't have been an accident. इंजीनियर जो है उस दिन अपनी शिफ्ट में जल्दी आ गए थे और सुबह 4 बजे उन्होंने स्टार्ट किया ये पुराना विंडस्क्रीन रिमूव करना इस प्लेन में से. What I'm after is I need 97 Ds. I'm just doing a windscreen on a 111 over there and I need some new bolts. 8 Ds on a 111? Well, no, these are 7s. This is a 7. I've just taken it out. We haven't got any 7s anyway. Okay. हैंगर जो था वो बिल्कुल भरा हुआ था और प्लेन जो था बिल्कुल हैंगर के दरवाजे के साथ पुश कर दिया गया था जिससे कि विंड स्क्रीन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो रहा था उस इंजीनियर के लिए. As he was stretched across the fuselage, he was having problems controlling his screwdriver. और जब उन्होंने विंड स्क्रीन रिमूव करी तो उनको पता लगा जो पुरानी विंड स्क्रीन जो लगी हुई थी वो गलत बोल्ट से लगी हुई थी, लेकिन वो पुराने बोल्ट इतने ताकतवर थे कि वो 4 साल तक विदाउट एनी प्रॉब्लम काम कर रहे थे ठीक तरीके से. और ये जो इंजीनियर है इनके दिमाग में आया कि वो इस बार जब वो नई विंड स्क्रीन लगाएंगे तो उसके साथ जो था नए बोल्ट लगा देंगे. उन्होंने पार्ट्स कैटलॉग में देखना मुनासिब नहीं समझा कि कौन से सही प्रकार के बोल्ट लगेंगे इस विंडस्क्रीन में. वो सीधा गए पार्ट स्टोर और उन्होंने अपनी सिर्फ नजर का ही इस्तेमाल किया वो बोल्ट को, नए बोल्ट और पुराने बोल्ट को मिलाने के लिए. उनकी नजर जो थी अच्छी थी और कई उनको नए बोल्ट बिल्कुल वैसे के वैसे ही पुराने की तरह उनको एक ड्रॉर में दिख गए. स्टोर मैनेजर को इस बात का ज्ञान था कि इंजीनियर को कौन से बोल्ट देखने चाहिए, कौन सा उनके लिए सही साइज होगा, लेकिन इंजीनियर ने उनकी एडवाइस नहीं ली, उसको दरकिनार कर दिया और वो एयरपोर्ट के दूसरे हिस्से में चले गए और वहां पे उन्होंने अंधेरे में ही ये बोल्ट ढूंढने शुरू किए जो उन्हें जरूरत थी. टाइम हो चुका था इस वक्त सुबह के 5:15 बजे और यहाँ पे अब जाके उनकी नजर ने धोखा दे दिया. उन्होंने जो बोल्ट चुने थे वो थे
200th of an inch smaller than what he had initially required. और अब प्लेन के ऊपर लेट के वो ये अपने नए बोल्ट लगाने शुरू कर दिए उन्होंने प्लेन के ऊपर, और चूंकि वो इस तरह से एंगल से लेटे हुए थे तो उनको ये पता ही नहीं लगा, इस बात का ज्ञान ही नहीं हुआ कि जो नए बोल्ट्स वो लगा रहे हैं वो प्रॉपरली फिट नहीं कर पा रहे थे उसके ऊपर। 6 बजे सुबह जब वो अपने घर गए तो उनका काम सही टाइम पे खत्म हो चुका था और वो प्लेन वो रेडी था टू बी हैंडेड ओवर टू कैप्टन लैंकेस्टायर एंड हिज टीम। In fact, it was a disaster waiting to happen. अगले दिन सुबह वो प्लेन उड़ रहा है तकरीबन 17,300 फीट की ऊंचाई पे, और जो अंदर और बाहर का जो प्रेशर डिफरेंस है, it was quickly climbing to half ton per square foot. It would reach to 35,000 feet. This difference in pressure was finding a weakness, and here it found one. जो पहला चीज उन्हें पता लगी थी वो चीफ इन्वेस्टिगेटर स्टुअर्ट के लिए सिर्फ एक पहला कदम था। अब उन्हें और गहराई में जाना था कि ऐसा क्यों इंसिडेंट हुआ, ये क्यों हुआ। किसी ने भी उनसे छुपाई नहीं थी ये बात कि उन्होंने रात को क्या किया था, लेकिन वो ये और जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हुआ, इंजीनियर ने ऐसा किया तो वो क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्या ये सिर्फ एक इकलौता केस था या एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का एक हिस्सा था। Accident investigation, certainly on aircraft, comprises two parts. The first part is what's happened, and that's usually relatively the easy bit. The second part is why did it happen? इंजीनियर ने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने जो है प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, क्यों उसने जो मैनुअल से उसको भी फॉलो नहीं किया, और जो स्टोर मैनेजर की जो एडवाइस दे रहे थे, हेल्पफुल एडवाइस दे रहे थे, जो उसको भी नहीं माना उसने। जो कॉलिन ने सर्च किया, ये खोजबीन करी आंसर्स के लिए, it itself turned out to be very revolutionary. If we talk to people without giving them a warning, we felt we'd get more information because they'd be freer to discuss it. If we gave them a formal caution, as it were, we thought that they would dry up. Coffee? Yes, please. Great. How was the journey in? Oh, well, usual stuff. वो डिसाइड करते हैं कि वो इंजीनियर से फिर बात करेंगे, लेकिन हैंगर में नहीं, वो एक होटल में उससे मिलते हैं और साथ में लाते हैं एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट। Is the aircraft normally in the hangar when you're doing that? साइकोलॉजिस्ट जो है पहले भी यूज किए गए हैं पायलट्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, लेकिन 1990 में वो इंजीनियरिंग स्टाफ को के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ऐसी बात किसी ने सुनी नहीं थी, और कॉलिन ने जो उनको यूज किया था अ बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, वो एक नई बात थी। I wanted a professional slant on what is really psychological territory. I would hope that as far as the shift maintenance manager was concerned, that it gave him extra confidence that we were trying to be even-handed and that we were trying to get to the bottom of it. You know, the parts catalogue. When you're getting the bolts out, do you go straight to the parts catalogue, or do you just sort of? Not usually. Right. No, if I've got a set of screws, there's a set of screws. I just go get them out of the carousels. Right. You find it's easier to do it visually. It was in that case easier to do it visually from the bolts you take now. Yeah, because they're the same bolts that come out, the same ones go back in, so same size bolts, there's no difference. And if it worked before, it must be the right bolts. Yeah, it's just replacing like with like, really. Yeah, because it had been flying. We were somewhat horrified that they had admitted those things to us, because after all we were officially in inverted commas,
And they were quite proud of them. We would have thought that had they used such practices, they would have kept very quiet about it. If I'd had to go check with the computers what bolts I needed and what parts and how to fit the thing, then there was a good chance it wouldn't have been flying at the time it was meant to be. Good, good. So, when you're doing the job now, you're an experienced engineer, it might not be by the book all the time, like you would train somebody who was new. No, not usually. We've been doing these things for years. Colin was stunned to hear what he was hearing, but there were more revelations to come. The engineer's dangerous approach was becoming clearer by the minute. You trusted your own knowledge better than the store supervisor's knowledge? Well, I'm an engineer. I got 7D bolts out, so I put 7D bolts back in. That's, well, you know, no problem with that. It's that simple. So you trusted that the aircraft had been flying, so therefore they must have been the right bolts? Yeah, that aircraft had done lots of hours with that windscreen. Their whole aim was to expedite work through their station. They had a lot of work coming. It was all done at night, and in many cases they had more work than they could reasonably handle. And they had devised little stratagems to get round that. चीफ इन्वेस्टिगेटर स्टुअर्ट और वो साइकोलॉजिस्ट की जो फाइंडिंग्स थी, वो जो इनिशियल जो रिपोर्ट आई थी फाइनल, उसमें भी उनका मेंशन था. लेकिन ब्रिटिश एयरवेज के लॉयर्स ने कहा कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके नहीं की गई है, तो इसलिए जो रिपोर्ट थी उसमें थोड़ा चेंजेस किए गए थे. By our, I mean the Treasury solicitor or whoever was advising the branch confirmed that under natural law it was unfair to use that information because we hadn't gone through the whole procedure. And so we had to remove that from the report. जो शुरू में रिपोर्ट आई थी उसमें ऐसा माना गया था कि जो मेंटेनेंस प्रोसीजर्स फॉलोड बाय द ब्रिटिश एयरवेज है, उसमें कुछ न कुछ फॉल्ट है. जो क्रू मेंबर्स थे उनको काफी अवार्ड दिए गए थे और वो उनको बहुत ही हीरो का दर्जा दे दिया गया था. और एलिस्टर एकिंसन को तो गोल्ड मेडल भी मिला था फॉर एयरमैनशिप. उनके कोलीग्स जो थे उन्होंने भी इन पूरी टीम को बहुत अपलॉड किया था जब ये जमीन पर उतर के एयरपोर्ट बिल्डिंग से गुजरे थे. तो one of the most moving things was to go back to Birmingham. As we walked into the airport, the whole of the airport stopped. And all the ground staff and all the checking girls and all that just stood and applauded as we walked through the building, and it was really quite, you know, moving at the time. You sort of wanted to get out of the way so that you could sort of, you know, I don't really want to do this. It's like walking up the red carpet sort of thing. They were applauding a team which had worked as a total team and which had displayed total professionalism at every level. हर एक टीम मेंबर के लिए ये बहुत ही अलग याददाश्त थी उस इंसिडेंट की, और वो उनके हर एक के अपने दिलो दिमाग पर आखिरी दिनों तक छाई रहेगी. कैप्टन टिम लैंकाशायर जो थे वो सिर्फ 5 महीने के बाद ही उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया था और वो फाइनली ब्रिटिश एयरवेज से रिटायर हुए. और क्योंकि उन्हें फ्लाइंग बहुत पसंद थी तो वो एक दूसरे एयरलाइन के साथ कार्यरत थे. It was a special day when the first day I flew. I decided, you know, that was what I was going to do. I was going to make an effort to go back to work and get better. So having made the decision, the rest was easy. I think about it every day. And that is the truth. I think about it every single day. In one form or another, yeah. Every single day.
it'll affect me till the end of my days. नाइजल, साइमन और सू ने बाद में जो है उड़ना छोड़ दिया था, लेकिन जॉन जो थे वो उसके बाद भी कार्यरत थे ब्रिटिश एयरवेज के साथ, और साथ में ही कार्यरत थे को पायलट एलिस्टर एकिंसन, जो कि ब्रिटिश एयरवेज के साथ ही बाद में तक काम करते रहे. They were bringing in another British aerospace aeroplane to where I worked in Birmingham, and unfortunately that window was fitted from the outside, and the layout of the cabin was identical. And when I sat on it, it all came back to you. But for that reason, I've gone back to work at Heathrow and fly long-haul flights again, because those aeroplanes have got no resemblance to the 111 at all. इस इंसिडेंट में लकीली किसी भी इंसान की जान नहीं गई थी, लेकिन इस इंसिडेंट ने ऐसा कुछ सिखाया पूरी एविएशन इंडस्ट्री को, जिससे कि आगे ऐसा कोई मिलता जुलता वाकया ना दोहराया जा सके. Tim explained it very well, actually, and he said our names were on the page but we weren't at the top, and I think that was, probably true. So, दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है आज का हमारा एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स का. और ये शो आ रहा था आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. और आज के शो में हमने चर्चा करी थी 10 जून 1990 की एक घटना, ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA 5390, जिसमें कि एक फॉल्टी मेंटेनेंस प्रोसीजर के अंतर्गत विंड स्क्रीन ब्लोज आउट इन मिड एयर. अगर आपको मेरे शो के रिगार्ड्स कोई फीडबैक देना हो तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं. मेरी मेल आईडी है bhambri.r@gmail.com, यानी कि bhambri.r@gmail.com. तो दीजिए इजाजत आपके होस्ट, आपके दोस्त भामरी को समेटने की आज का शो. मिलूंगा मैं आपसे ठीक अगले हफ्ते, ठीक इसी टाइम, ठीक इसी दिन और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर, और लेके आऊंगा मैं एक नया एपिसोड आपके इसी फेवरेट शो दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स का, और करेंगे हम चर्चा इस धरती पे घटित एक और किसी दुर्घटना की. तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस.